Hi everyone, in today's video, we're going to talk about the perception of pain and the mechanisms that relieve pain. Now, pain in itself, it's a blessing if you think about it. Pain is a sensation that warns of potential injury and alerts the person to either avoid it or treat it. Now, what am I saying? कि पेन जब होती है so that's the moment that we realize कि नहीं अभी it's the time कि हमें डॉक्टर को जाकर विजिट करना चाहिए and we need to further inquire कि मसला क्या है actually में. For example, headaches होती हैं and then पेशेंट को पता चलता है कि नहीं हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड वी नीड टू गेट दिस फर्दर इन्वेस्टिगेटेड कि एक्चुअल में व्हाट्स द रूट कॉज ऑफ दिस पेन. तो पेन इन disguise इज अ ब्लेसिंग, राइट. और दूसरा इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर आप सॉस पैन टच करें वो गर्म है तो आपको पेन होगी देन ओनली यू विल रियलाइज कि नहीं आई नीड टू अवॉइड दिस, है ना. आई हैव टू नॉट टच इट एनी मोर वरना बर्निंग शुरू हो जाएगी. माई फिंगर्स माइट गेट बर्न, माई हैंड माइट गेट बर्न, राइट. So, pain is a sensation that warns of potential injury and alerts the person to either avoid it or treat the root cause. Now, pain can be divided into two types. One is the fast pain and the other is slow pain. So, fast pain is the type of pain which can be experienced in zero point 0.1 seconds after the pain stimulus is given. And slow pain is the type of pain that can be experienced 1 second after the painful stimulus is given. So this is like the key difference. Now, other than that, fast pain is an acute pain. Other than that, it's a sharp pain and it's sort of a pricking pain. For example, this is the prime example for fast pain is the needle prick that you experience. That's a fast pain. Slow pain is a burning pain. It could be a throbbing pain, it could be an aching pain, or any sort of nausea and all that. That could also be slow pain. So, what are the examples of slow pain? It could be arthritis, for example, that's also an example of slow pain, or abscess. All of that could be an example of slow pain. Now, usually, the fast pain it is experienced by chemical or thermal types of stimuli, chemical and thermal. Sorry, mechanical and thermal. I made a mistake here. Fast pain is experienced by mechanical, it's caused by mechanical and thermal stimuli. On the other hand, if you talk about slow pain, so it's caused by chemical, mechanical, and thermal. So there's an addition of chemical. So there's also chemical stimulus for this. Very important. Now, again, let's recall कि मैंने कहा था कि पेन इट्स अ ब्लेसिंग. अगर पेन होगी तभी आपको पता चलेगा कि हाँ देयर इज सम देयर माइट बी a root cause to this pain. So I need to either get it treated or I need to avoid whatever I'm touching right now. ठीक है. अब फास्ट पेन इसका एक डिवीजन है, स्लो पेन दूसरा. फास्ट पेन 0.1 सेकेंड्स में और स्लो पेन 1 सेकेंड में. फास्ट पेन एक्यूट होती है, शार्प होती है. It could be the pricking pain, example the pain that you experience after a needle prick. The slow pain, it could be burning or throbbing or aching. Example, abscess or arthritis की pain. ठीक है. अब जो स्टिमुलस आते हैं फास्ट पेन के, they could come from mechanical or thermal. लेकिन स्लो पेन के, they are mechanical, thermal as well as chemical. Right? Other than that, you have two types of fibers. आपके पास एक होते हैं slow diameter के. Either you have A delta fibers or you have C fibers. So A delta fibers हैं वो fast pain के लिए और जो C fibers हैं वो slow pain के लिए. ठीक है. तो अगर कोई भी impulse it travels through A delta fibers, that is fast pain. Any impulse that's traveling through C fibers, that's going to cause ultimately the slow pain. अब I did mention chemical substances, right? जो आपकी slow pain cause करते हैं. So many chemical substances have been found in extracts from damaged tissue that will excite free nerve endings. And these सो फ्री नर्व एंडिंग्स क्या करते हैं, पेन कॉज करती हैं. सो देर अगर आप पेन होती कहाँ है, पहले तो रूट कॉज बताते हैं. पेन कहाँ होती है, पेन उसी रीजन में होगी जहाँ कोई भी डैमेज टिश्यू होगा. कोई भी डैमेज टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू या इंसल्टेड टिश्यू होगा, उधर आपको पेन एक्सपीरियंस होगी. अब यहाँ जो फ्री नर्व एंडिंग्स है ना, वो डिटेक्ट करेंगे कि अच्छा इस डैमेज टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स रिलीज हुए हैं. ये केमिकल्स आर गोइंग टू स्टिमुलेट योर nerve endings. और कौन से nerve endings, ये C fiber की nerve endings, क्योंकि chemical is the only stimulus for the slow fibers, right, the C fibers, the slow pain. तो इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये पेन हो रही है. फिर ये रिसेप्टर्स obviously ये पूरा nerve fibers will go to the brain or higher centers, spinal cord कहीं भी, and then आपकी पेन डिटेक्ट होगी. तो अब इन केमिकल्स में क्या क्या आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. इन केमिकल्स में वी हैव सेरोटोनिन,
सेरोटोनिन आएगा, उसके अलावा ब्रेडिकाइनिन आएगा जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ब्रेडिकाइनिन। उसके अलावा लैक्टिक एसिड भी आएगा, पोटेशियम भी आएगा, और लैक्टिक एसिड, पोटेशियम, एंड वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टामीन। हिस्टामीन इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, तो ये केमिकल्स हो गए, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, लैक्टिक एसिड एंड पोटेशियम। अब हिस्टामीन जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, सेरोटोनिन आप सोच रहे होंगे ये इधर क्यों आ गया, सेरोटोनिन तो हमारा हैप्पी मूड लेकर आता है। यस, तो सेरोटोनिन इट कैन आल्सो इंक्रीज द पेन, इट कैन आल्सो डिक्रीज द पेन, सो इट हैज डुअल फंक्शन। तो सेरोटोनिन भी है इधर। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया, बट देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एज वेल। वो क्या है, एक है सब्सटेंस पी, दूसरा है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का तो हमने बहुत सुना है कि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं ऑल दैट, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये दोनों जो थ्रेशोल्ड है ना पेन का उसे डिक्रीज करते हैं, थ्रेशोल्ड को। अब जब वो थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाएगा तो आपको ईजिली पेन फील होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेन का था कि उसने इस 100 लेट्स से ये 100 लेवल तक, ये 1 लेवल से शुरू हुई है, 100 लेवल पर पहुंच के आपको पेन फील होनी है, लेकिन बिकॉज द बॉडी हैज रिलीज सब्सटेंस पी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इट इज गोइंग टू ब्रिंग दैट थ्रेशोल्ड टू 50। तो पेन बस 50 तक भी आएगी तो आपको वो थ्रेशोल्ड अचीव होगा, मतलब 50 तक भी आएगी तो आपको अल्टीमेटली यूल फील द पेन। ठीक है, तो सब्सटेंस पी और प्रोस्टाग्लैंडिन्स अल्टीमेटली दे डिक्रीज द what do you call it, threshold for the pain. So the threshold for pain endings can be lowered by prostaglandins and substance P, but they cannot stimulate the endings directly uh, by themselves. तो ये अभी भी इवन तो उन्होंने थ्रेशोल्ड डिक्रीज कर दिया है, अब वो थ्रेशोल्ड आ गया, तो यही वाली दे आर गोइंग टू इनर्वेट द नर्व एंडिंग्स। ठीक है, एंड देन द पेन विल बी फेल्ट। तो इसमें देयर वाज सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट पेन, बट आई होप कुछ ना कुछ समझ आ रहा है। इसके अलावा ये फाइबर्स तो मैंने अब क्लेरिफाई कर दिए। अब मूविंग ऑन, जो हमारी फास्ट पेन होती है उसके बारे में एक और चीज़ भी है कि जो फास्ट पेन है इट्स वेरी लोकलाइज्ड, दिस इज प्रिसाइजली लोकलाइज्ड, कि अगर नीडल प्रिक हुई है कहीं बिल्कुल उसी पॉइंट पर आपको पेन होगी। बट जो स्लो पेन होती है इट्स पुअरली लोकलाइज्ड। तो इसकी पुअर लोकलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हेडेक हो रही है आपको, तो यू डोंट नो एग्जैक्टली किधर वो थ्रॉबिंग पेन है, यू माइट बी थिंकिंग कि नहीं इधर है उधर है, सो इट्स पुअरली लोकलाइज। अगर स्टमक में एक हो रहा है, सो you still wouldn't be able to figure out exactly which region is it, stomach, is it your intestines, is it your liver, what is it. So this is very poorly localized if you talk about the slow pain. Other than that, your fast pain is much more confined to your skin, usually skin पर feel होती है। जो स्लो पेन है ये आपके जो विजुअल ऑर्गन्स हैं या डीपर लेवल्स पर एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, डीपर लेवल्स पर। उसके अलावा यस, ये तो हमने बहुत ज़्यादा पेन की बातें कर ली कि ऑल ऑफ द पेन दैट्स अकरिंग एंड व्हाई इज इट अकरिंग, राइट। ये पूरा मैकेनिज्म भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि केमिकल्स यूजुअली स्लो पेन को करते हैं, है ना, लाइक केमिकल्स स्लो पेन को स्टिमुलेट करते हैं। और कौन से केमिकल्स, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, लैक्टिक एसिड और पोटेशियम। ये जो है ये स्लो पेन को डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये थ्रेशोल्ड को डिक्रीज कर देते हैं। जब थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये वाली जो केमिकल्स हैं ये इजीली नर्व एंडिंग्स को उस थ्रेशोल्ड पर भी स्टिमुलेट कर देंगे और पेन इजीली रिसेप्टिव। सिंस नेचर हैज मेड द पेन, इट वाज आल्सो गिवन अस अ वे इन व्हिच वी कैन कम्बैट द पेन, which is with the help of pain relieving mechanisms. उसमें आता है massage, acupuncture, liniments, and also by giving low frequency electrical stimulation with the help of electrical rods. ये सारी टेक्निक्स हैं जो पेन को रिलीव करने में मदद करती हैं। अब मसाज का तो हमने बहुत कॉमनली सुना है, सो वी ऑलरेडी नो, किसी को भी कोई भी मसला होता है, जॉइंट पेन होता है, तो उन्हें ये कहा जाता है कि मसाज करें उससे पेन रिलीव होगी, दैट वी ऑलरेडी नो। अब एक्यूपंक्चर क्या है, तो दिस इज अ जापानीज टेक्निक विच इज यूज्ड बाय अ टेक्नीशियन जिसको ऑब्वियसली लाइंस ऑफ एनर्जी का पता होता है, जिन्हें मेरिडियंस कहा जाता है। इन लाइंस ऑफ एनर्जी पर दे इंसर्ट नीडल्स एंड दिस हेल्प्स टू relieve the pain. अब what is liniments? अब liniments भी embrocation है जो अप्लाई की जाती है बॉडी पर in order to relieve pain. Ointment और liniment में क्या फ़र्क है? Ointment is applied on the skin to help with skin allergies and dryness. Liniment आपको कोई अंदरूनी कोई भी मसला हो, जैसे joint pain हो, muscle pain हो, उसको relieve करने में मदद करती है। Ointment usually greasy or sticky होती है. Liniment it can be warming or cooling. It generates a cooling or warming effect. Or L for liniment, N for liquid. So this is more of a liquid consistency. और ointment जो है ये semi solid और thick consistency का होता है। अब pain जब भी होती है
तो उस पेनफुल स्टिमुलस फॉर एग्जांपल अगर ये पेनफुल स्टिमुलस है बॉडी डिटेक्ट करिए, उसी वक्त आप एक नॉन पेनफुल स्टिमुलस दे दें तो बॉडी का पूरा फोकस यहाँ से हटकर उस नॉन पेनफुल स्टिमुलस पर चले जाता है, तो पेन डिटेक्ट नहीं हो रही होती है, वो नॉन पेनफुल स्टिमुलस वो ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा होता है। मसाजिंग, दैट्स प्राइम एग्जांपल, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस, लेट्स रीड फ्रॉम द बुक। इस पूरी थ्योरी को कहा जाता है गेटिंग थ्योरी। इसमें होता क्या है, and that it suggests that the site where the pain fibers enter the CNS, inhibition could occur by the means of connector neurons, which are excited by large myelinated afferent fibers carrying information of the non-painful touch and pressure. तो ये जो afferent fibers हैं जो non-painful touch और pressure को लेकर आ रहे हैं, these are going to activate or excite connector neurons. These connector neurons are going to produce inhibitory neurotransmitters जो कि pain को completely, they're going to forget the pain. Now, excess tactile stimulation produced by massage closes the gate for pain. ये क्या करता है? Closes the gate for pain. Once the non-painful tactile stimulation ceases, gate is opened again, and again you will be able to feel the pain. So, although gate theory, it may be partially explained by the phenomena, it might partially explain the phenomena of pain relieving, but there's also an analgesia system which is involved in relieving the pain. तो दो systems, एक analgesia system और एक gating theory. तो gating theory में exactly क्या होता है कि जो नॉन पेनफुल स्टिमुलेशन है वो डिटेक्ट होने लग जाता है और ये जाकर एक्टिवेट करेंगे कनेक्टिव न्यूरॉन्स का, कनेक्टिव न्यूरॉन्स इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगे। तो ये आपका गेटिंग मैकेनिज्म हो गया, पूरा गेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब गेटिंग मैकेनिज्म, लेट्स रीड दिस टेक्स्ट। Spinal cord acts as a gate that can either block or allow pain signals to reach the brain. This modulation is influenced by two types of nerve fibers. एक large diameter fibers होते हैं और ये large diameter fibers non-painful stimuli से एक्टिवेट और स्टिमुलेट होते हैं। जो स्मॉल डायमीटर फाइबर्स हैं ये पेन के होते हैं फाइबर्स, ठीक है। और स्मॉल डायमीटर फाइबर्स में आपके पास ए डेल्टा और सी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। अब ये पेनफुल स्टिमुलाई को करेंगे स्मॉल डायमीटर वाले, ठीक है। अब जब ये लार्ज डायमीटर वाले जो कि आपके नॉन पेनफुल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं वो स्टिमुलेट होंगे, दे आर गोइंग टू इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल्स, क्लोजिंग द गेट एंड रिड्यूसिंग द पेन। Conversely, जब भी small diameter वाले fiber stimulate होते हैं, they're going to open the gate or pain signals will be transmitted to the brain and they'll be detected. The sending signals from the brain, such as endorphins released during stress or pleasure, can also close the gate. उसके अलावा जो endorphins हैं, वो भी pain को kill करते हैं because they're going to close that gate. और जब वो gate बंद हो जाएगा, तो you won't be able to detect the pain. Massaging an injured area closes the gate and reduces the perception of pain by activating the large nerve fibers that compete with and inhibit the smaller pain-carrying fibers in the spinal cord. This process is explained by gate control theory of pain, where the non-painful stimulus of massage closes the gate by activating inhibitory interneurons that block pain signals from reaching the brain. So in short, ये जो last line है, that's the entire summary. ये जो आखिरी line है, ठीक है। अब हमें समझ आ गया। Now what is analgesia system? Analgesia system में जो brain stem है उसके certain areas are going to release compounds which are having morphine like activities, और इनमें compounds कौन कौन से, endorphins और enkephalins। अब इसमें होता क्या है exactly? Stimulation of certain areas of the brain stem can reduce or block sensations of the pain. अब ये आ गया आपका एनाल्जेसिया सिस्टम। ये था गेटिंग थ्योरी, और अब एनाल्जेसिया सिस्टम में हमारे ब्रेन स्टेम के सर्टेन एरियाज दे आर गोइंग टू रिलीज such substances that will reduce or block sensations of the pain. अब इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं? एक तो पेरीवेंट्रिकुलर ग्रे मैटर जो कि आपके डाइनसेफेलॉन में होता है, सो पेरीवेंट्रिकुलर ग्रे मैटर ऑफ डाइनसेफेलॉन, देन पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर ऑफ योर मिड ब्रेन, and midline nuclei, raphe nuclei, which are in your brainstem. So these are the three things: periventricular gray matter of diencephalon, periaqueductal gray matter of midbrain, and midline nuclei, raphe nuclei of the brainstem. These are uh, these are the areas, ठीक है। इनमें से होगा क्या? Fibers of the reticulospinal tract are believed to pass down to the spinal cord and synapse on cells concerned with pain sensation on the posterior gray column. The analgesic system can suppress both sharp working pain and burning slow pain sensations. And how does it do so? By releasing compounds which have morphine-like actions, और कौन से compounds हैं? Enkephalins or endorphins. So यहाँ से मतलब basically होते हुए descending pathways आएंगे and they're going to release neurotransmitters that inhibit pain.
or these are the morphine-like substances. Now, morphine, we must have heard its name quite often, like in pata nahi hai what it does. So, morphine is a medication which is used to relieve severe pain. Morphine is a class of medication which is used to relieve severe pain, and other than that, uh, it is called opiate narcotic analgesics. It works by changing the way brain and nervous system respond to pain. It is primarily used for severe pain, such as that caused by major trauma, surgery, labor, cancer, or a heart attack. It can be also used to alleviate chronic breathlessness in certain conditions. So this is basically an external medicine that you give, morphine. अब brain अब आपकी body के अंदर endogenous substance क्या है इनके काम जैसे morphine आप बाहर से देते हो ना as a medication, body के अंदर भी naturally produced, biologically produced और natural painkillers present हैं जिनको क्या कहते हैं endorphins और enkephalins. Endorphins are peptide produced in the brain that act as natural painkillers, blocking pain signals and creating a sense of well-being. They're released in response to stress or pain, as well as during pleasurable activities like exercising, eating, and intimate activities. Their effect includes pain relief, stress reduction, improved mood, regulation of immune and inflammatory responses. They're neurotransmitters. So they're basically a neurotransmitter, which are chemical substances in nervous system. So endorphins, uh, endo means they're endogenous within the body, and morphine means it comes from the orphan. This is derived from morphine, which is a pain relieving medicine drug. Okay. Now इनका mechanism क्या है कि they bind to opioid receptors in the nervous system, and these are primarily produced by pituitary gland and the hypothalamus in the brain, and they block pain signals and lessen the intensity of the pain. They contribute to the feelings of pleasure and well-being, and they help to reduce stress, anxiety, and depression, and they can decrease inflammation and calm the immune system. They also play they also play a role in regulating appetite and supporting cognitive function. The hormones that are released when your body feels pain or stress. They're produced in your brain and act as messengers in the body. They help to relieve pain, reduce stress, and improve mood. So इसमें I can't keep on repeating the same things, like you understood. They help decrease stress and anxiety, depression. They help in weight loss, decrease in childbirth pain, and also boost self-esteem. So endorphins करते क्या exactly? Um, Endorphins, they release and they decrease the pain reception. They basically block the pain reception by binding to opioid receptors located on the presynaptic membrane and block the release of substance P. और ये substance P का release को भी inhibit करते हैं. Substance P क्या करता था? Threshold for pain को decrease करा था. अब enkephalins क्या है? They are okay. So they're enkephalins. Upon release, they bind to primary sensory fibers, inhibiting the secretion of glutamate and substance P. So this results in reduced transmission of pain signals to higher centers. इनकेफ्लिन का भी बिल्कुल सेम काम है, ठीक है, और इसके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं. अगर इनकेफ्लिन कम होगा तो फिर हंटिंगटन्स डिजीज होगा. अगर इनकेफ्लिन ज़्यादा होगा तो अल्जाइमर डिजीज हो सकता है. और अगर इनकेफ्लिन बहुत कम है तो फिर डिप्रेशन भी हो सकता है. And what is SSRI? We have heard of this a lot. So this is basically serotonin, selective serotonin reuptake inhibitor. It's basically a class of antidepressant medication. And how does it work? For example, serotonin, it really helps to alleviate mood, right? तो ये आपका serotonin reuptake transporter है. तो obviously अगर serotonin निकला है तो it will also be destroyed in your cleft, synaptic cleft, and then it will be reuptaken, right? But SSRIs do what? They block this. So, because of this, the serotonin, it remains in your synaptic cleft and it works for a longer period of time. And it helps to give a very happy mood and, you know, remove all sorts of sensation of depression and sadness. So now you know the primary things. So the takeaway message from this entire talk about pain should be that you should know that endorphins and enkephalins, they help to reduce the pain. These help to reduce the pain. SSRI, it's an antidepressant. It helps to alleviate the mood.
Serotonin, it can work both to decrease and increase the pain, right? And you should know about prostaglandins and substance P. They cause the pain because they decrease the threshold for pain. And all these chemicals also cause the pain because these are the chemicals that are released and they stimulate the nerve endings, which are responsible for the slow pain stimulation or slow pain reception. And morphine decreases the pain. So these are some things that you need to know. And you need to know the gating theory and the analgesia system. So that's it.